नमस्ते दोस्तों, दिस इज रोहित शाह फ्रॉम किस्मत कनेक्शन। कई लोगों ने मेरे को मैसेज किया है कि एनी टिप्स फॉर द पुष्य नक्षत्र। एक्चुअली देयर इज अ टू, वन इज टुडे एंड रवि पुष्य नक्षत्र इज टुमारो. Tomorrow it's around 6:30 a.m. to 1:15 p.m. So in Pushya Nakshatra, what one should do is I have written down. You need one silver coin और 5 रुपया या 10 रुपये का सिक्का भी चलेगा. सो व्हाट यू हैव टू डू, आपके घर पे अल्टर में जहाँ पे लक्ष्मी जी का फोटो रहेगा या मूर्ति रहेगी तो आपको गंगा जल से वॉश करना है. टेम्पल को भी थोड़ा क्लीन कर दीजिए. यू नीड काउ घी एंड द दिया. इट्स बेटर इफ यू हैव द earthen pot to lit the diya. So what you have to do is, once you have done the cleaning of the Lakshmi Ji statue with the Ganga Jal or the photo, if you have the photo, then what you can do is you can sprinkle few Ganga Jal water in your altar, in your home temple, and then आपको सिल्वर कॉइन वहाँ पे रखना है, or any other currency coin that you have in circulation. Light the cow ghee diya and then chant Shrim, SHREEM. श्रीम मंत्र की आप 108 times जाप कीजिए, एक माला that is. You can also do multiple malas like 9, 11, 21, yeah, if you have time and if you wish to do. So, but minimum 108 times you have to chant Shrim. So once you are done, you have to make sure that जो दिया आपने जलाया है वो दिन भर जलता रहे. So make sure you have the enough ghee, for that purpose. And during the sunset, then you have to take that coin, silver coin or any other coin, and put it in your rice container, जहाँ पे आप कच्चे चावल रखते हो ना पकाने के लिए, उस डिब्बे में आपको वो कॉइन रखना है. And make sure that throughout the year the container have the rice, any amount, but there has to be a rice and the coins should be there as well. And then what it will do is it will bring a good luck, lots of prosperity, abundance, happiness throughout the year. So try this totke and do share the results. Thank you very much, friends. Rohit Shah from Kismet Connection.